हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पब सब कंसेप्ट वी हैव लर्नड अबाउट दैट एंड आफ्टर दैट वी हैव लर्नड हाउ द पब्लिकेशन नोड वर्क। ओके, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हमारा जो है डाटा वो कुछ नोट्स के बारे में पढ़ने पढ़ने वाले हैं। बेसिकली कुछ नोट देखने वाले हैं, डाटाबेस नोट देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे फिल्टर नोट, देन फ्लो ऑर्डर नोट, मतलब बहुत सारे नोट्स देखेंगे हम लोग। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ओके, आपको डाउट है यू कैन आस्क मी, यू आर फ्री टू। ओके ओके, तो लेट मी शो यू एवरीथिंग इन डिटेल। एंड इसके लिए हमें क्या करते हैं, तो हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली डाटाबेस नोट पढ़ने वाले एंड हाउ इट्स वर्क। ओके, एंड डिटेल में देखेंगे। तो इसके लिए हम एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और लेट्स सी फ्रॉम स्क्रैच। ओके, let me name the application like that, maybe like that, simple database, something like that. Okay, anything you write, just click the finish. Then after that click create a message flow. Let me create the message flow name same IIB for database. Okay, let me keep it same. Okay, now we write the broker description. Okay, IIB dot database dot msg flow. Okay, now let me finish. Now our message flow has been created. Now it's time to create. हम लोग बेसिकली तो बात करते हैं डाटाबेस नोड के बारे में, राइट। तो डाटाबेस नोड आपको यहाँ मिलेगा, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। नाउ उसके लिए हमको चाहिए एमक्यू इनपुट नोड टू पुट द सम इनपुट, टू पुट द सम इनपुट मैसेज, राइट। ओके, तो ये मेरा इनपुट मैसेज हो गया। लेट मी कनेक्ट इट। And also if some error happens, then we need the accept handler flow. Let me just drag and drop the accept. Okay, now we connect it. We connect the exception. Okay, but in case some exception happen, it will go message to here, right. Now our whole flow has been now. Let me put some queue here, queue name here, where we will put the message that we are basically creating for the. Let me take any queue name from here. Let me put it test routine, something like that. That queue currently not in use. I put that. Okay. Now, now let's discuss what is database node. Okay, why it is good to discuss database node. Now, database node is used for database operations. Database is used for database operation. Okay, कोई लाइक दैट, अगर कोई हमको ये डाटाबेस है, मेरे पास डाटाबेस में अगर टेबल देखें, यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है। Select star R T। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल है, इसमें टोटल 37 कॉलम्स है, राइट। 37 कॉलम है। okay? तो टोटल 37 कॉलम्स है, रोज कॉलम नहीं, कॉलम बोल सकते हैं। ओके, टोटल 37 जो आपके पास ये जो है रोज है। नाउ
हमको इस टेबल में कुछ इंसर्ट करना है, टेबल से कुछ डिलीट करना है, कुछ अपडेट करना है, या सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, इन चारों में से कुछ करना है। देन हम क्या करेंगे, हम डाटाबेस के नोड की वजह से हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। तो वी कैन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस नोड। उसका से आप चेक देखिए, अगर आप एक कंप्यूट नोड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्यूट नोड एंड डाटाबेस नोड। ओके, लेट मी शो यू व्हाट इज डिफरेंस। लेट मी add here a compute node, compute, you will get the difference। अगर आप डाटाबेस नोड पहले जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डाटा सोर्स नेम देना है, राइट हियर आईपी डॉट ओके। नाउ डाटा सोर्स नेम में यहाँ पर आपको, यहाँ पर डाटा सोर्स नेम है, या फिर उसके बाद से बगल में फिर कन स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन वेयरिंग और ट्रांस थ्रू एक्सेप्शन समथिंग लाइक दैट करके है। ओके, इतना सारा अगर प्रॉपर्टीज दिया गया बस। बट यही सिर्फ आप कंप्यूटर नोड में फिर जाते हैं, तो कंप्यूटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक करके एक ESQL मॉड्यूल करके सेगमेंट है। आई थिंक दिस सेगमेंट हियर नॉट प्रेजेंट, राइट। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर तब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंप्यूट मोड करके यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं मैसेज, लोकल इन्वायरमेंट एंड मैसेज, एक्सेप्शन समथिंग लाइक दैट, यू कैन सेलेक्ट। यहाँ पर जो है कंप्यूट मोड में ये फैसिलिटी है मैसेज का, और लोकल इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट का फैसिलिटी है, और यहाँ पर हमें कंप्यूट मॉड्यूल का दिया हुआ है। बाकी सेम चीज एज इट इज है, डिफरेंस देखिए सिर्फ इसमें और इसमें इतना सा डिफरेंस। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स ये है कि अगर किसी नोड में अगर ये फैसिलिटी दिया हो कंप्यूट मोड का, इसमें मैसेज, लोकल इन्वायरमेंट, देन इट कैन डू सम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बट इफ इस अगर ये चीज यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि कंप्यूट नोड कैन डू सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैसेज, while database node cannot do transformation of message। ट्रांसफॉर्मेशन मैसेज की मतलब इनपुट में कोई मैसेज डाला, उसको तोड़ फोड़ दिया, तोड़ फोड़ के कुछ नया बना दिया, है ना, बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और जो अगर कोई तोड़ फोड़ के कुछ नया नहीं बना पाया, देन उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि किसी चीज को तोड़ फोड़ के नया बना देना, जो इनपुट से कुछ लिया उसको तोड़ फोड़ के नया बना दिया, और तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ जो है कंप्यूट नोड में ही होता है, डाटाबेस नोड में नहीं होता है। ओके, तो इन कंप्यूट नोड देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन हैपन, व्हाइल इन डाटाबेस नोड देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन नोट हैपन। सिमिलरली जो है, अगर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा डाटाबेस नोड में, तो यहाँ पर देयर इज ए नो कंसेप्ट ऑफ आउटपुट ट्रू, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लोकल इन्वायरमेंट, लोकल इन्वायरमेंट, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इनपुट रूट। यहाँ पर इनपुट रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, लोकल इन्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो है आपके पास यहाँ पर जो है आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है आपको हर जगह एग्जिस्ट करता है। इन्वायरमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, इट्स ओके, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है एवरीवेयर एग्जिस्ट करता है, तो इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर लोकल इन्वायरमेंट, आउटपुट रूट और इनपुट रूट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो ये बेसिक सा डिफरेंस रहा कंप्यूट नोड में और डाटाबेस नोड में। नाउ लेट मी डू सम ऑपरेशंस। ओके, बट एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ पर लगाए हैं क्या, इनपुट नोड। इनपुट नोड से कुछ डाटा को हम फेच करने वाले हैं डाटाबेस नोड में, तो उसके लिए हमको कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर जो है हम लोग जैसे कि एज वी यूज इनपुट रूट फेच सम इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूट नोड, हियर इनपुट रूट बदला में सिर्फ रूट यूज करेंगे, RWT रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रूट यूज करेंगे to fetch some information from the input root। okay, let me write some code। okay, तो हम लोग इस कोड में क्या करने वाले हैं, हम लोग एक छोटा सा कोड लिखने वाले हैं, जो क्या करेगा कि जो भी इनपुट में मैसेज आएगा उसको इस टेबल में क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक कोड लिखेंगे जो कि इंसर्ट करने वाला है टेबल, यहाँ पर जो कुछ कॉलम, लाइन और रो कुछ को यहाँ पर नया सैंतीस है, इसको कुछ और रो को इंसर्ट करके और यहाँ पर इंसर्ट करने वाला है, जो कि यहाँ पर हम लोग छोटा सा कोड लिखने वाले हैं, और इसी आफ्टर दैट तभी ये ऑपरेशन होने वाला है। तो लेट मी डू सब।
सबसे पहले बताते हैं हम लोग क्या इंसर्ट करने वाले हैं। तो हमने एक छोटा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल डिटेल्स के अंदर में आर्टिकल है, और ये बहुत सारा आप देख सकते हैं आर्टिकल के अंदर नेम प्राइस क्वांटिटी, नेम प्राइस क्वांटिटी। आप सेम चीज देख सकते हैं यहाँ पर भी। आप यहाँ पर क्या है, नेम आर्टिकल क्वांटिटी एंड प्राइस है। सेम चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आर्टिकल नेम है, आर्टिकल क्वांटिटी है, प्राइस है। तो सेम सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पर रखे हैं कि आर्टिकल नेम क्वांटिटी एंड प्राइस, और उसको हम यहाँ फर्दर हम लोग इसको यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं यूजिंग द इंसर्ट ऑप्शन। तो ये हम लोग बेसिकली इनपुट मैसेज थ्रो करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट मैसेज मेरा ये यहाँ पर इंसर्ट होता है कितना है। बट बिफोर दैट लेट मी डू समथिंग, लेट मी, दीज ऑल आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, so let me do some changes। यहाँ पर शर्ट की जगह पर हम 1200 को क्या मिल सकता है, शर्ट की जगह पर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर रेडियो, रेडियो लिमिट है। नाउ यहाँ पर एसी जब लिख देते हैं यहाँ पर राइट हेयर एज वॉशिंग, वॉशिंग, और इसका दाम घटा के हम लिखते हैं around 25,000। ओके, नाउ हियर let's give this हटा के लिख देते हैं बैग। नाउ क्या मजा हटा के लिख देते हैं क्या, let me write something I can write फ्रूटी। ठीक है, तो हमने 4 लिख दिया। आप देख सकते हैं इस टेबल में रेडियो, वॉशिंग मशीन, बैग और हमको पहले से कोई चीज़ नहीं है। अगर देखना है तो पेंसिल पेंसिल पेंसिल, लैपटॉप, बीच में लैपटॉप, वॉच और टेबल, कोल्ड ड्रिंक्स। आप देख सकते हैं अगर कोई चीज़ नहीं करता है, आप ये चारों चलिए सेट करने वाले हैं, राइट। तो लेट मी राइट सम कोड। हम लोग इसलिए क्या करने वाले हैं, हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर्टिकल के अंदर आर्टिकल डिटेल्स के अंदर जाकर आर्टिकल का इन्फॉर्मेशन को नेम, रेडियो और क्वांटिटी फेच करने वाले हैं। कि पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल, चारों आर्टिकल के अंदर जा जाके अब उसको नेम, क्वांटिटी और प्राइस को हम लोग इन्फॉर्मेशन को फेच करने वाले हैं और इंसर्ट करने वाले, राइट। लेट मी डिक्लेयर द इनपुट रेफरेंस, राइट। लेट मी डिक्लेयर INREF reference to, you can see here in compute node basically what we do, in compute node हम लोग क्या लिखते थे, इनपुट आउटपुट हम लोग लिखते थे कि इनपुट रूट, राइट। तो कंप्यूट नोड में लिखते हैं, यहाँ पर इनपुट रूट लिखते हैं। बट हियर इनपुट रूट विल थ्रो एन एरर, इनपुट रूट यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर इनपुट रूट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर रूट, हम लोग रूट लिखते हैं। नाउ इट्स एरर है बिल्कुल। यहाँ पर जो है इनपुट रूट को नहीं लिखते हैं, देन रूट डॉट एक्सएमएल एनएससी, देन इसके अंदर में आर्टिकल डिटेल्स, देन आर्टिकल, देन ये मेरा रहा। हमने क्या किया, डिक्लेयर किया एक रेफरेंस वेरिएबल, वेरिएबल का नाम ये है, इसका जो है हमने पॉइंट कर रहे हैं आर्टिकल डिटेल्स तक, राइट। हमने डिक्लेयर कर दिया। और आर्टिकल हम आई रेफ की मदद से क्या करेंगे, आर्टिकल डिटेल के अंदर जो भी वैल्यू है, नेम क्वांटिटी प्राइस, नेम क्वांटिटी प्राइस, नेम क्वांटिटी प्राइस, नेम क्वांटिटी, हम इजीली से फेच कर सकते हैं, राइट। नाउ हमको, लेकिन हमको क्या करना है, हमको बहुत सारे आर्टिकल्स है, एक आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल है, तीसरा आर्टिकल है, बहुत 4 आर्टिकल है। 4 आर्टिकल है तो 4 आर्टिकल को मतलब हमको इन्फॉर्मेशन को फेच करना है। तो हम डायरेक्टली, या तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, और फेच करके मुझे इंसर्ट भी करना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम इसको एरे लगा कर दें, एरे लगाएंगे तो हमको थोड़ा सा कोड मेरा लंबा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका हम क्या करें, वाइल लूप लगाए। वाइल के वाइल वाइल में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अ, आपको एक तरीके वाइल में या तो कैडेनेटिव यूज कर ले, कैडेनेटिव यूज करिएगा तो उसके लिए हम आपको जो है कार्डिनेटिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और इसका हम लोग जो है ये आर्टिकल कितना बार रिपीट कर रहा है वो काउंट करके फिर वाइल लूप लगा के सॉल्व कर सकते हैं।
है लूप, सिंपल लूप लगा के। कर्ली फंक्शन इज नॉट प्रेफर्ड, तो उसका हल हम लोग यूज करेंगे वाइल के बाद यूज कर सकते हैं, वाइल लास्ट मूव कर सकते हैं, वाइल लास्ट मूव करके और लास्ट लास्ट मूव इसको कराइएगा, फिर तो फिर या तो यूज कर सकते हैं वाइल लास्ट मूव, उसको से जो इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के बाद फिर हम लोग लेंगे मूव दिस टू नेक्स्ट सिबलिंग, राइट। या तो यूज कर सकते हैं आप फोर लूप, फोर लूप भी सिंपल तरीके से वर्क करेगा, और फोर लूप यूज करके आप चाहे तो इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप तीनों बता दिए, आप तीनों ट्राई कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक करने वाले, कोई एक जो बोलिए हम एक कर देते हैं। ट्राई द फोर लूप, फोर फोर दिस, क्या लिखते हैं, फोर एनी वेरिएबल एज, रेफरेंस कहाँ तक देना है, जो रिपीटिंग टैग है वहां तक देना है, तो रिपीटिंग टैग कौन है, आर्टिकल है। फोर, क्या फोर करना है, मतलब उसका एज करके रेफरेंस करके कहाँ तक, वहां तक जो रिपीटिंग टैग, रिपीटिंग टैग मेरा कौन है, आर्टिकल रिपीटिंग टैग है, रिपीटिंग टैग तक, और ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसके बगल में रजिस्ट एक्सप्रेशन दे देंगे, डू, देन हमको करना होगा इंड फोर, इंड फोर। नाउ मेरा कोड कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स डू सम इंसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट इनटू, कहाँ इंसर्ट करना है भाई, आर्टिकल में, आर्टिकल, इंसर्ट इनटू आर्टिकल, वैल्यूज दे देते हैं कुछ वैल्यूज। नाउ वैल्यू क्या देंगे हमको, आर्टिकल आई एन रेफ, आई एन डायरेक्टली पॉइंटिंग टू आर्टिकल, आई एन डायरेक्टली पॉइंटिंग टू आर्टिकल, इसके अंदर जाकर नेम क्वांटिटी और प्राइस को फेच करना होगा, ठीक है, राइट। तो लेट मी राइट आई एन रेफ डॉट नेम, ओके, नाउ ब्रैकेट में, और लेट मी डू वन थिंग, फटाफट इसको कॉपी कर लेते हैं, बाद में चेक कर देंगे दिस। नाउ let me do thing, let me select these things and write here, okay. Now now yeah, last one is the price, okay. Now let me copy paste the price. Now it's done. Ignore this error because here one thing I have left, data is, this is basically coming because there's some schema name I have not written. If you write the schema name, there will go, but it will work fine. Basically, what I am doing, I am just declaring to the article which is lifting tag. I am again applying the for loop, lifting tag. It will run till the loop will end, and it will insert the this tag. Okay, and I'm going to throw in into this, and want to insert these all information into this table. Right now, ready to mm, to experiment. Let's do. So let me now my code is ready. Let me, which is my application, this is my application, let me build and save the bar file. For that, before that, let me create the bar file. Let me keep the same name, IIB database. Okay. Now just click a place. Now let me IIB database build and save. Okay. Now it's done. Now you can see here the bar file is created. Now let me deploy this. There is a deploy option. Now let's deploy it before, but before that, one mistake I have done. Let me correct. I'm going to send some XML message, so I have to make here the XML NSC. Now let's put again, save, build and save the bar file.
Again, let's deploy and see what is. Okay, now let's run the debugger. Debugger has been launched. Let's check the queue test dot. Now let's check the message. What is the message? Article detail dot db. Now you can see the message I have taken. Right now, radio, machine, bag, and routine. We add the message. Right, what is it? Okay. Next, right queue test dot in, and then so it's test dot in sent already. Let me start here. 7 already. See, somehow it has got inserted. My debugger has been not launched. Tell me why. Can you give me one reason why it has not debugger was launched? Just I need one reason because I'm giving you the kitty from the long time, giving the lecture from the long time. You need to tell. Okay, I'm not going to tell because I have not added any breakpoint here. Right? Let me add a breakpoint. Now I need to change the this information because I am to import to insert different thing. So let me add now different name. What is that? Um, item. Let me write it as a edge earphone. Okay. Now let me here write it a mobile phone. But last time you can see same thing we have been inserted, right? Washing machine, cold drink, table, everything you can see radio, bag, fruity, right? Disseminate me again. Mm, mobile phone. Now me here that here now. The t-shirt. I think shirt is already there. Now it's saved. Okay. Now let me write the message. Surveillance. Surveillance. Let me browse the message. Now I have taken the same message. Right. Write the message. Now you can see now debugger is launched. Now let me go inside the database node. Actually, we have declared the INREF. You see here we have declared the INREF. That value is showing like that. Now let me run the all lines. Now you can see this line is continuously running because for loop is continuously running and getting inserted. Okay. Now okay, all four having now 44 and we are adding 4. Now it's 45. Now it's 45. You can see at the last earphone 125 mobile phone, this amount, t-shirt, this amount, and of this amount. Right? We have 4 row inserted. These all 4 row inserted. Right? And in this way, it's work. Now let's think one thing. I'm not told you.
Here I have not used the output node. Okay, if I use output node, there will be no benefit. Okay, that's the reason. Especially if we are here, we are doing the insert operation, right? And if you are using the output route, there will be no benefit of using the output route. Whatever you sending in input route, you will get in output route. Let me show you. Use the output route, because this node is basically the database node is not doing nothing. It's just doing some database operation like that: insert, update, and delete, and select. Okay, that this operation basically database node is doing. This node is basically doing nothing. Okay, then whatever you sending, there is no translation happening here. So then whatever sending in input node will go to the output node. Okay, let me write here the key name, that is test dot out. Okay, test dot out, and see what is sending. We are doing, see how what is coming in the out node. This time I'm not going to modify the message. I'm going to again write same message. I have built save the bar file. I have deployed it. Let me run a debugger. For that, let me also put the breakpoint. Now, let me write a message. Same message. Now it's done. Let me go again inside it. See, it is now inserting, and again inserting. After that, it goes to the return to means it will go to the out terminal. Okay. Last time you have written return to, but there is no benefit of return. That value last time I was not using this. Really, this at that time it is better to prefer write return false. Now let's again move forward. Now we are going to the out terminal. Okay. Now you see the test.out, the same message. See, this is the message I have sent in the input, and this is the message we are getting in the output. So whatever you will send in the input, you will get in the output. Okay. This is all about the database node. We have learned. Let me again summarize the what is database node in the simple. Okay. Database node is a node which is basically we use for the insert database operation like that: insert, update, delete, and uh, insert, update, delete, and select. Okay. In database node, we cannot do the transformation work because there is no such facility of transformation. Okay, there is no concept of output route or local informant and input route. Okay, if we are as we use the input route to fetch some information in the uh, input in the compute node, similar manner we can use the route we can to fetch some information from the input. Okay, now if you are using the somehow output node, whatever we are setting input node, you will get it. You are going to get here. So this is all about database node. वो आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय, बाय बाय, सी यू अगेन।